everyone, welcome back to my channel. Are you also tired of that stubborn blackhead and whitehead? So you are at the right place. मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ easy and effective home remedies जो actually work करती है. और सबसे अच्छी बात, no expensive products and no salon visits needed. Stay tuned till the end because I'll be sharing my ultimate pro tips that will prevent from coming back. ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस इट. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्लैकहेड एंड व्हाइटहेड. ब्लैकहेड क्लॉग पोर्स होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने से ब्लैक हो जाते हैं या फिर डार्क हो जाते हैं. व्हाइटहेड क्लॉग पोर्स होते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं, जो हमें येलोइश या व्हाइटिश दिखते हैं. इनका मेन रीजन होता है एक्सेस ऑयल, डेड स्किन सेल्स और कभी कभी बैक्टीरिया. जब स्किन आपकी क्लीन नहीं होती है तब ये प्रॉब्लम होती है. सो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्लैकहेड से होती है या व्हाइटहेड से? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. सो आई विल बी शेयरिंग प्रॉपर होम केयर रूटीन जिससे आप ये सबको बचा सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज स्टीमिंग विच हेल्प्स टू ओपन योर पोर. पानी बॉईल करो, एक बोल में निकालो और अपने सर पर टॉवल से कवर करके बोल के आगे लीन हो जाओ. स्टीम फॉर 5 to 10 minutes. Want to make extra luxurious? Add a few drop of tea tree oil in it. Now let's exfoliate your dead skin cells. So a gentle scrub is your skin's best friend. So let's DIY. ये DIY स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए 1 tablespoon of crushed sugar and 1 tablespoon of honey. अगर आपको भी इसकी कंसिस्टेंसी थिक लगती है तो यू कैन ऐड रोज वाटर इन दिस. इसकी एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बनाएं और इसको अप्लाई करिए नोज, चिन, फोरहेड पर. सर्कुलर मोशन में जेंटली, डोंट हार्श विथ योर स्किन, क्योंकि हम स्किन एक्सफोलिएट कर रहे हैं ना कि बूट पॉलिश. सो बी जेंटल विथ योर स्किन. For making clay mask, you need 1 tablespoon of multani mitti powder. For mixing it well, you can add water, or if you want you can also add rose water. And one important superhero is our turmeric. Just add little amount of turmeric in it and make a smooth paste. We are adding turmeric in this because turmeric have antibacterial and antifungal property. Apply a thin layer of mask focusing on your T-zone area, especially on your chin, on your nose area, as well as your forehead. If you want to apply on your full face, you can apply, but I'm targeting my T-zone area because I have more amount of oil secretion over there. After application, sit back and relax because skincare is all about time. Now wait for 10 to 15 minutes, then wash it with lukewarm water. After application of this mask, your skin gonna thank you because after this your skin starts feeling refreshing. Now your skin is all clean. Hydration is the key. So don't forget to apply lightweight and non-comedogenic moisturizer because आपकी skin proper clean हो चुकी है, but now your skin need hydration. And yes, of course, how can we forget about the sunscreen? So sunscreen is essential for every skincare. Guys, take a appreciation moment because glowing skin is always. और अब बात करते हैं प्रिवेंशंस की. ये कुछ टिप्स है जो आपके ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स को आपसे काफी दूर रखेगा. सबसे पहली चीज, वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार फेस वॉश करो. सेकेंड, अवॉइड टचिंग योर फेस विद डर्टी हैंड्स. इट इज अ टोटल गेम चेंजर. थर्ड, नेवर एवर स्किप योर सनस्क्रीन. Always apply SPF on your face. And fourth, exfoliate your face twice a week. At least once a week you have to do exfoliation. And last, and the secret weapon of your oily skin and black and whitehead is salicylic acid. Salicylic acid is a total game changer for your oily skin. It controls your oils as well as it keep bacteria away from your skin.
दिस वन इंग्रेडिएंट कैन डू वंडर। ये था आज का वीडियो। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। इफ यस, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट सच मोर कंटेंट। एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कौन सा हैक सबसे पहले आप फॉलो करने वाले हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ग्लोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।